हम डिस्कस कर रहे थे इनरोल एजेंट। तो इनरोल एजेंट एक फेडरल लाइसेंस होता है जिसमें से कि आप ऑथराइज होते हो प्रैक्टिस करने के लिए टू ऑल ओवर द 50 स्टेट्स ऑफ द यूएस। एंड इसमें क्या होता है, आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स लगते हैं इसको करने में। और इसको करने की जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट, अगर आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 60,000 70,000 के आसपास ये कॉस्ट रहती है, एक्सक्लूडिंग कोचिंग। अगर आप कोचिंग वोचिंग ये सब इंक्लूड करते हो तो ये ऑलमोस्ट आपका 1,25,000 1,40,000 इस रेंज में कुछ फॉल करता है। इसमें बेसिकली आपका 3 पेपर होते हैं। पार्ट 1 जो होता है आपका वो इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए होता है, जिसमें से कि आप ये सीखते हैं कि हाउ टू डू टैक्सेशन फॉर इंडिविजुअल, एंड जिसमें से कि आप फॉर्म 1040 मेजरली आप यूज़ करते हैं। पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में आप जो है कॉर्पोरेट टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, सीखते हैं इसको। पार्ट 3 आता है आपका जनरली प्रोसीजरल पार्ट है, जैसे लाइक आपका पेनल्टीज़ क्या होंगी और लेट फीस क्या होगी, आपकी प्रोसीजर कैसे होगा, प्रोसीजरल टाइप ऑफ थिंग। इट्स मोस्ट ऑफ द theoretical part, and first 2 part are theory plus numerical part. And after doing this and for taking the exam, you must hold the PD number, प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये लेना पड़ता है हमें। इसके लेने के बाद में हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं प्रोमेट्रिक सेंटर से, और हम एग्ज़ाम दे सकते हैं इसको। आप कोई भी ऑर्डर पहले दे सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये ऑर्डर पहले करना पड़ेगा। आप यू कैन चूज़ एनी ऑफ द ऑर्डर फॉर द 3 पेपर्स, एंड इट इज़ वेरी मच स्पेशलाइजेशन इन द टैक्सेशन। But disclaimer is it does not include the local taxation, which is called state and local taxes salt, and it generally and mostly limited to the federal tax. And it also include the like FICA tax, payroll tax, and withholding tax, these। और इसमें आपका ऑलमोस्ट डॉलर के टर्म में कैलकुलेट करें तो $267 ऑलमोस्ट फीस लगती है ईच पेपर, और 140 लगते हैं इनरोलमेंट फ़ीस। और इसमें टेस्टिंग सेंटर आप मेजर सिटीज़ में मिल जाते हैं, आपके लाइक दिल्ली है, बेंगलोर, हैदराबाद, इसमें प्रोमेट्रिक सेंटर मिल जाते हैं इसके। अब हम बात करते हैं कि करियर इसमें क्या होता है। आपको ईज़िली ये लैंड करा देगा एक एमएनसी कंपनी में, या फिर एक कंसल्टिंग कंपनी हो गई, या फिर बिग फोर हो गई, इसमें टैक्सेशन रोल में। And you can easily after clearing this expect around 8 to 10 lakh. And if you got experience of 2 year 3 year, then you can jump to the ladder of around 14 to 15 lakh. And after getting 4 to 5 years, you can cross 20 lakh limit. So you can start as a tax associate, then become a tax senior associate, then become tax manager, independent director for tax, and this will give you the equal footing about equal footing about with the CPA and EA and CPA. Currently, the market is saturated because generally in HR JDs, there is, if there is a position for US taxation, they ask for CA also. But I literally don't understand why they are asking the Indian CA. Indian CA doesn't know anything about the US taxation unless they have gone through this. So in the coming time, in the because in the present time, they give the training to the Indian CAs and take the work from them. But as the trend is increasing to get a enrolled agent license, so in the future there will be very specific requirement, like we need enrolled agent qualified person for US taxation work. And there is abundance of work, there are lots of work, hell of work coming to the India, and it is paying a good chunk. And mostly it is a kind of home work from home opportunities. And this is the opportunity in the, if you are preferring the job role. Other than this, you can work as a freelancer.
You can set up your own firm. You can registered on the a freelancing website. You can work on the project basis for the US client. And there are companies in Canada also, because they are sister concern company. And there are lots of people who are working in USA. So they need to file tax. So you can become a bridge between the tax, between the IRS and the and people who are required to file the return. It gives a good amount, and it does not take much time. And it is just a it is just a it is just it is just a small duration course, and which can land you a professional certificate. You can represent your client. Suppose it is not just the ITR filing. Suppose if there is a audit notice from the IRS, you can represent your client in the IRS. So I will say it's a win-win situation going.